Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 7 and the name of our unit is The Role of Government and Citizens. Today I will deliver its fourth lecture. So my dear students, let's quickly start the lecture with the recap of the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. So my dear students, quickly tell me that what is a citizen? Very good. The resident of a country is known as its citizen. And quickly tell me, you are a citizen of which country? Pakistan. Very good. Okay, my dear students, now it's time for an activity. So quickly, what you need to do is you have to follow this link. आपको ये link click करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक previous video है जो कि related है government से. ये class 2 की video है और इसमें तमाम services about the government कौन क्या होती है, ये हमें क्या क्या चीज़ें provide करती है. This is discussed in this video. So go watch this video and then come back. I hope everybody has watched the video and now you know about the government. Now let's move forward. Okay, my dear students, in today's lecture, the students will be able to describe what the government does to meet the needs of the citizen, and they will also be able to suggest the ways government and people work together to meet people's needs in the area. So my dear students, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से सिटीजन्स की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती है और कैसे गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स collectively when they work they get more benefits and they can fulfill their needs easily. So my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So Allah says in Quran that, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So my dear students, आप देखें कि जैसे आज हम पढ़ेंगे कि कैसे government and citizens जो हैं together they help each other and this is how they fulfill their needs और इस तरीके से जो है वो लाइफ को जो है वो बेटर बनाया जा सकता है. So इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ट्राइब्स में या कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो पैदा किया है ताकि हम सक्सेसफुली या ईजिली मूव ऑन कर सकें. So my dear students, now it's time for a pre-reading question. Quickly tell me that how do you illuminate your house? With the help of electricity and bulbs. Very good. Now quickly tell me, from which source do you get water? Your taps. Excellent. Now tell me, how does your mother cook food? She cooks it on the stove where there is gas. So ये चीज़ें कभी आपने सोचा है कि electricity, clean water that is coming in your taps and the gas that is coming in your stoves, कहाँ से आती है ये? That is provided by the government. Very good. Okay, my dear students, now I request you all to please open services provided by the government in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, here you can see the picture that electricity, water and gas, these are some basic necessities which are provided by the government. Now let's quickly start the reading. Put your fingers where I will read. Some of the services provided by the government are as follows. Electricity, gas and water. The government provides water, electricity and gas to its citizens. Government makes sure that everyone has easy access to safe and hygienic water, electricity and gas. So my dear students, जो आपकी basic necessities हैं जिनमें बिजली, पानी और गैस है, ये तमाम सर्विसेज जो है ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हो ताकि हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ जो है वो ईजी हो जाए. Now let's move forward towards the next service that is provided by the government and which is very important. It is education. Government of Pakistan is providing free education up to matriculation. Above this, the government provides subsidies education. However, in some rural areas, the condition of education system is still worse. The government is trying to improve it.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो इस बात को इंश्योर करती है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है मैट्रिक तक, यानी कि आपकी 10th क्लास तक आपको फ्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। आफ्टर दैट आपको जो है वो वजीफे मिलते हैं जिससे जो है आप अपनी फर्दर एजुकेशन जो है उसको जारी रख सकते हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो विलेजेस हैं जो अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए, वहाँ पे एजुकेशन अभी भी उधर का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, बट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट and trying to make it better. So my dear students, the next is military and police force. So my dear students, गवर्नमेंट की एक और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने मुल्क के शहरियों को, सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें. सो दे प्रोवाइड द सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दैट. Government has police force for the protection of its citizens. It also has a military force for protection of the country. So my dear students, लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि वो लोगों को महफूज रख सके, उनको सिक्योर रख सके. और मुल्क की हिफाजत के लिए आर्मी या मिलिट्री होती है जो कि मुल्क को या मुल्क की सरहदों को डिफेंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट, healthcare. Public hospitals provide medical treatment and healthcare facilities to improve the health of people. Unfortunately, the majority of rural areas of Pakistan lack basic healthcare facilities. Government is trying its best to provide these facilities to all over the Pakistan. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो है आपकी सेहत की जिम्मेदारी, यानी कि आपको बेहतर सेहत के लिए इलाज प्रोवाइड करना या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना. पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अभी भी बहुत से बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा सकी. बट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन इट एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. Now let's move forward towards the next service which is provided by the government. That is transportation system. So transportation system basically क्या है? जिन roads के ऊपर आप travel करते हैं, जिन buses के अंदर, public transports के अंदर आप लोग travel करते हैं, they are provided, the roads are built by the government. So ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छी सड़कें फराहम करें और अच्छी public transport फराहम करें. Now let's read about it. The transportation system of Pakistan is serving a huge population for traveling nationwide. National highways and motorways have increased trade within country. Underpasses and flyovers have further fastened the communication and traveling. Airports and seaports have also been offering services since long. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके लिए रोड्स बिल्ड की जाती हैं. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, बसेस, टैक्सीज, इसके अलावा ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, दीज ऑल आर मीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन. और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये आपको बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करे. इसके अलावा रोड्स बिल्ड की जाती हैं, मोटरवेज बिल्ड की जाती हैं. इसके अलावा सी पोर्ट्स हैं जहाँ बहरी जहाज़ होते हैं विच आर इंक्लूडेड इन द ट्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So they are also a means of transportation. So these all the services of transportation are provided by the government. Very good. So next is waste management, जो कि बहुत important चीज़ है because waste management होगी, waste को properly dispose of किया जाएगा, proper pickups होंगे, तभी जो है वो pollution कम से कम हो जाएगी. So let's study about the waste management, क्योंकि ये भी government की जिम्मेदारी है कि वो properly जो है वो waste को उठाए, उसको पिकअप करें और फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो. और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करें जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए और वेस्ट जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो. नाउ लेट्स रीड अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट. Waste is a material that has no value for people. This trash cannot be carried through sewage pipes, thus can add more pollution on the land and in water. People themselves are responsible for this type of pollution. Mostly, people throw their trash in waste bins installed by the government.
or in empty plots. In Pakistan, solid waste management companies are established. These companies have hired cleaners for collecting the trash and garbage. Our government fulfills our needs. It provides us all with the facilities which are needed for human beings to live. It looks after the security of citizens. Okay. So my dear students, waste management के लिए ऐसा होता है कि जितना भी वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, जिसकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं होती, हम उसको फेंक देते हैं, उन डस्टबिन से फेंकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की होती हैं, कूड़ेदान होते हैं वो. इसके अलावा एम्प्टी प्लॉट्स जहां हमें नजर आते हैं, हम वहां भी कूड़ा फेंक देते हैं. तो इसमें बहुत ज़्यादा गलती सिटीजन्स की भी है कि वो प्रॉपरली जो है वो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते या उन जगहों पे नहीं रखते जहां जो कि गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की हुई है जगह. इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसे क्लीनर्स को हायर किया हुआ है जो कि ट्रैश को पिकअप करते हैं और उसको फिर कहीं जाके प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करते हैं या उनसे रिसाइकलिंग भी की जाती है. सो हमें चाहिए कि हम हमेशा जो है वो गवर्नमेंट के हेल्प आउट करें उनको और प्रॉपरली जो है वो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करवाएं उनके साथ मिलके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो हमें कोशिश करती है कि तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो. सो similarly, the citizens should also join hands with the government. They can maintain their neighborhood playgrounds and parks. They can organize litter clearing campaigns and support local communities by collecting money to buy solar panels or water coolers. Government should also introduce such activities that need citizens' participation and appreciate them for being a productive part of a community. They should work for the betterment of their country. So my dear students, जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें हेल्प आउट करी है, हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो हमें चाहिए कि हम भी उनके साथ हैंड इन हैंड होके, यानी कि उनके साथ शाना बशाना होके, उनके साथ चल के उनको हेल्प आउट करें, ऑर्गेनाइज हो जाएं, अपने प्लेग्राउंड्स को मेंटेन करें, अपने नेबरहुड को मेंटेन करें, गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकें. इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं हम उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे. सो जब हम मिल के ये तमाम काम करेंगे तभी जो है हमारी कम्युनिटी और हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री जो है वो फ्लरिश करेगा और बेहतर हो जाएगा. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So, my dear students, what you need to do is role of government, explain some of the services provided by the government. So, electricity, water and gas, how it is provided, then education, health and care, transportation system. Write a few lines about it. These are the different services that are provided by the government. तो आपको इनके बारे में कुछ lines जो है वो लिखनी है. You can take help from the book also. So pause the video and quickly finish it. I hope everybody has finished it. Now let's move forward towards the picture reading. It is given on page number 63 of your books. Quickly open it. I hope everybody has opened the page. So my dear students, what you need to do is identify the given pictures and tick those basic needs of the people which are provided by the government. So my dear students, here you can see a lot of pictures: toys, electricity, food, healthcare, education, clothing, gas and video games. So my dear students, आपको इसमें से उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है या उन सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, healthcare facilities, education, gas. So these are all the basic facilities or the services which are provided by the government. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. For evaluation, I will ask some questions orally and you will answer them orally. Zabani aapne answer karna hai on page number 62. So question number 10 is, which services are provided by the government to its citizens? Education, healthcare facility, water, electricity, gas, and then comes waste management, transportation. These are all the different services which are provided by the government. Who gives us protection? Our government gives us protection with the help of military and police force. Question number 12.
What are the responsibilities of our government regarding healthcare facilities? So regarding healthcare facilities, basic healthcare facilities should be provided to all citizens, and we must have clinics, dispensaries, and hospitals throughout the community so that people can easily reach up to them. Even in the backward areas, there should be healthcare facilities provided by the government. Okay, my dear students, this is it. Now is the time to note down the homework. For homework, you will do home activity number 2 given on page number 59. Visit a school dispensary and a park playground made by the government nearby your house. Write the services being provided there. So my dear students, आप कोई कहीं भी जा सकते हैं, आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं, प्लेग्राउंड या पार्क जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और फिर आप वहाँ देखें कि वहाँ कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं. सो यू कैन हैव अ क्विक टूर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. यू कैन गो in the evening and you can have a look at the dispensary or a playground and then note down कि कौन सी services जो है वो government आपको provide कर रही है वहाँ. Okay, so this is your homework. Then home activity number 3, this is also given on page number 59. So name some public transport facilities provided by the government of Pakistan. Metro bus, orange train, then comes the airlines, then there is train service, railway service. So these are different transportation services which are provided by our government. Okay, so next is, we have done it. So now you will do question number 4 given the writing practice given on page number 65. Why do we need a government? We need the government to take care of different needs of to take care the needs of the citizens in their daily lives. So that's why we need a government. So you will write down this answer in your notebook, question in your notebook, and then answer it. Okay, this is your homework. So my dear students, now is the time for wrap up. For wrap up, what we need to do is we will have a look at what we have learned from today's lecture. So in today's lecture, we have learned that problems of the people are solved by the government. Government provides us with electricity, water, gas, security, healthcare facilities, education, and etc. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.